Pakistan ISI and military intelligence officers have been singled out and they are being targeted by the Majid Brigade of the Baloch Liberation Army. Do keep in mind, Gwadar is a very crucial port. It's a Chinese port in Pakistan. There are a large number of Chinese workers and engineers in this Gwadar port complex area. Of course, officially very sketchy details from Pakistan on this attack on the Gwadar Development Authority, the Port Authority. There are reports of at least 3 to 4 Pakistani security forces casualties, fatalities, and at least 8 Baloch Liberation Army fighters. They've lost their lives. Gwadar is the hub of the $60 billion China-Pakistan economic corridor. Baloch freedom fighters say Pakistan has occupied Baluchistan and is exploiting Baloch resources. China has also been in the line of fire. I'm Gaurav Sawant. We'll get you much more on this breaking news story on India First. But first, as always, the headlines at 10. DMK kicks up a storm with its election manifesto. MK Stalin promises changes to the constitution to curtail powers of the governor and the removal of the Citizenship Amendment Act. The BJP, it's out. Big suspense over Varun Gandhi's Lok Sabha candidacy. Sources say he may fight as an independent if denied a BJP ticket from Pilibhit in Uttar Pradesh. The Samajwadi Party is learned to have extended an invite, says they're ready to induct Varun Gandhi. Rahul Gandhi's Shakti Bar controversy snowballs. BJP moves the Election Commission, claims Rahul Gandhi violated the Model Code of Conduct, demands an unconditional public apology and stringent action against the Congress leader. Double murder horror in Uttar Pradesh, Badaयूं. Throats of 2 young children slit allegedly over a money dispute. Killer Sajid killed in encounter. Hunt on for his accomplice and brother Javed. Prime Minister Narendra Modi speaks to the presidents of Russia and Ukraine on phone. Sources say both President Putin and President Zelensky have invited Prime Minister to their countries after India's Lok Sabha elections. The Gwadar port in Balochistan is under siege. Latest reports from Pakistan indicate massive exchange of fire between Pakistani security forces and the Baloch Liberation Army. Massive exchange of fire apparently has been on for the past 6 hours and counting at the Gwadar Port Authority complex, and a series of explosions and a heavy exchange of fire has been reported in an area that's now been completely cordoned off. We are told that even as we speak, mopping up operations are still underway. Pakistan ISI and Pakistan military intelligence officers, they are in the line of fire of the Baloch Liberation Army. The Baloch Liberation Army, BLA, it's issued a statement. It's claimed to have inflicted heavy casualties on the Pakistani security forces. No reports yet on the status of Chinese workers and engineers who live and work in this part of Balochistan in large numbers. Of course, there are reports of multiple casualties and some fatalities on both sides, the BLA side and the Pakistani security forces side. The attack, of course, has raised several questions on the viability of the $60 billion China-Pakistan economic corridor. China has already sunk in close to 60 million in this project. There have been reports of multiple attacks even in the past on Chinese resources in Pakistan. Remember the Dasu Dam complex, several Chinese engineers were killed there. The Confucius Academy attack, several Chinese were killed and injured in that attack. Baloch Liberation Army's Majid Brigade issued a statement a short while back claiming
the launch of this attack, saying they have specifically targeted officers of Pakistan's ISI and military intelligence. Now, this attack is on in the Marine Drive area of Gwadar in Balochistan. Very sketchy details. Gwadar is crucial for China-Pakistan economic corridor, and there are areas within Gwadar, within this port complex, where the Chinese are completely in control. They do not even permit people from Balochistan to come there. But are China-related projects as part of Belt and Road Initiative already in trouble repeatedly in the line of fire in Pakistan? And is Pakistan either powerless or unwilling to stop these attacks? Is Pakistan stabbing China in the back? Joining me on this special broadcast, I want to quickly bring into this conversation Bahut Baloch. He represents the Baloch freedom fighters. Arzu Kazmi is a journalist and analyst who joins us from Islamabad, and Sushant Sareen is a senior fellow at the Observer Research Foundation. I first want to bring in Bahut Baloch, who joins us on this broadcast. Sir, what can you tell us? What's the latest that's on in Gwadar? Baloch Liberation Army के जरिए आपको इस समय क्या पता चल रहा है? What can you tell us? What are the Baloch freedom fighters telling you, sir? ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के हवाले से ग्वादर में आज होने वाले हमले के बाद किलर एंस ऑपरेशन जारी है। हमले में पाकिस्तानी फोर्सेस खासकर इंटेलिजेंस, जहां पर एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस है और आईएसआई के हेडक्वार्टर्स है, उन पर हमला किया गया था। उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के डॉक्टर इमरान समेत दीगर एहलकारों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि पाकिस्तानी अस्करी हुक्काम की जानिब से 8 हमलावरों के मारे जाने की दावा किया जा रहा है। ठीक। Arzu Kazmi, how serious is this attack on the Gwadar Port Authority? What are you being able to pick up? What are authorities telling you? देखिए गौरव, आई वांट टू से कि ये जब भी आईएमएफ का लोन मिलने वाला होता है पाकिस्तान को, आई डोंट अंडरस्टैंड कि उस वक्त इस किस्म के अटैक्स क्यों शुरू हो जाते हैं, उससे अलग क्यों नहीं होते, ये बिल्कुल कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। ना ये टीटीपी को कंट्रोल कर पा रहे हैं और ना ही ये बीएलए को या बलूचिस्तान, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एरिया है पाकिस्तान का, उसमें किसी तरह से भी ये कंट्रोल कर सक रहे हैं। आपको अगर याद हो तो अभी कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो आर्मी चीफ से मिले थे और बाहर आकर उन्होंने ये कहा कि जी हम हर तरह की सहूलत जो है वो आर्मी को देंगे। लोगों ने इसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन किया। उनका ख्याल ये है कि जो आईएमएफ से लोन आ रहा है इसका मतलब है कि वो सारा का सारा ये या तो अफगान बॉर्डर पे लगा देंगे या फिर ये गवादर में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बात करके, और पब्लिक के लिए वो पैसा नहीं होगा। तो एवरीवन इज सो मच डिस्टर्ब्ड और लोग इसको कोई खास अच्छी तरह से नहीं देख रहे हैं। यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब भी आईएमएफ से कोई लोन आने लगता है उससे पहले इस किस्म की सिचुएशन बन जाती है। अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखें, गूगल करें, तो आपको पता लग जाएगा कि जब भी आईएमएफ ने क्लियर किया है कि वो पैसा दे रहे हैं पाकिस्तान को, तभी ये सारे एक्शन शुरू हो जाते हैं। ठीक। सुशांत सरीन, Pakistan Army had actually raised 2 division-sized forces to protect the China-Pakistan economic corridor, but it seems that the Baloch Liberation Army today managed to find chinks in Pakistan's armor. So, what are you picking up about this particular attack? Gaurav, the details are very sketchy right now, and given the fact that this is Balochistan, the Pakistanis very often have this kind of a media clampdown. Information is very hard to get by, and whatever information you get, for example, from social media handles of the Baloch freedom fighters or from the other side, they really need to be verified, and that takes a little bit of time. But what we know is that this is yet another attack on a very critical part of the infrastructure or the security infrastructure in Gwadar. Now, does this have a bearing on the CPEC? I think the CPEC is a dead horse. I don't think even the Chinese are interested in CPEC anymore. They're not going to put in any more money or throw in good money after bad. But I think from a strategic point of view, the importance of these attacks is the refusal of the Baloch to accept Chinese presence inside Balochistan, which means that the Chinese plans that even if CPEC dies, at least they get hold of the Gwadar port and then they develop it into some kind of a naval base, so that they maintain a presence in the Indian Ocean or the Western Indian Ocean. I think that is going to take a big blow.
because quite clearly the Baloch people do not want another colonial power after Pakistan inside Balochistan. Number one, that is one. The second is the ferocity of the attacks has been increasing. Yes. And there's reason to believe that a lot of this has to do with what is happening further up north. And there are some reports which suggest that some parts of the Baloch freedom movement have actually made tactical alliances with the TTP and other jihadist groups. Not that the Baloch are jihadist in orientation, but you know, my enemy's enemy is a friend, kind of a deal. Yeah. So they are kind of making common cause against a common enemy, and we are seeing a kind of ratcheting up of these attacks in Balochistan as well, just as we are seeing it in northern Balochistan and further up north in the tribal areas or the former tribal areas of Pakistan. So clearly, you know, if you go west of the Indus River, that is an area of Pakistan which is increasingly spiraling out of control. In fact, virtually every part of Pakistan is burning right now. But बहुत बलोच reports इस तरह की आ रही हैं. Reports seem to suggest that this was a very well-planned attack on a critical security infrastructure in Gwadar. What more can you tell us about the areas that have been targeted and the mission of the Majid Brigade of the Baloch Liberation Army? क्योंकि बहुत केयरफुली टारगेट को चूज किया गया था, आईएसआई का हेडक्वार्टर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर्स. तो क्या 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 मैसेज देना चाहते हैं बलोच लिबरेशन आर्मी वाले? ग्वादर अपने जोग्राफिया के बायस बहुत ही अहमियत रखता है, जबकि यहाँ पर सीपैक के आने के बाद इसकी अहमियत में मजीद इजाफा हुआ है. बलोच जो मासिद है, बलोच फ्रीडम फाइटर्स है जो मुसल्ला जद्दोजहद कर रहे हैं या कि कौम परस्त हल्के है, उनका यही कहना है कि सीपैक एक इस्तेसाली प्रोजेक्ट है जिसके बायस बलूचिस्तान के ग्वादर शहर को चाइना के हवाले किया गया है, जो इसको अपनी फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके बायस इस पर लगातार हमले करते रहे हैं और इसको निशाना बनाते रहे हैं. तो ये जो मैसेज है ये चाइना के लिए ज्यादा है, पाकिस्तान के लिए कम, क्या ये माना जाए आरजू काजवी? बिकॉज दिस इज इन द फर्स्ट टाइम दैट चाइनीज इंटरेस्ट have come under attack in Pakistan. Remember that Dasu Dam project, you were a guest on my show. After that, to that Confucius Center attack, to this Gwadar port attack. Each attack, Arzu, has been more audacious than the last. और ग्वादर पोर्ट तो एक तरह से चाइना की दुखती रग पर अटैक है, मतलब यूं कहा जाए ड्रैगन की टेल पर पैर रख दिया है. देखें, हो सकता है कि चाइना इसमें टारगेट हो, लेकिन गवादर जो है वो एक तरह से बलोच डोमिनेटिंग एरिया है. वहाँ पे आपको पख्तून कम मिलेंगे और बलोच ज़्यादा मिलेंगे. और यहाँ पर ये भी है कि पाकिस्तान ने कभी कोशिश नहीं की कि जो बीएलए कह रहा है, या जो बीएलए को भी अगर छोड़ दें, जो बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जाए, उसके बजाय उनको तरह तरह से जो है वो डोमिनेट करके और साइड लाइन दिखाई जाती है. इस वजह से भी इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं. मगर साथ ही अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त पाकिस्तान काफ़ी मुश्किल में है, क्योंकि एक तरफ केपीके या कह लीजिए कि अफगान बॉर्डर जो है वहां पे भी काफी टेंशन है, और साथ ये भी अगर टेंशन बढ़ती चली गई तो बहुत मुश्किल होगी. अगर पाकिस्तान की एजेंसीज चाहें तो वो इनको कंट्रोल कर सकती हैं. और अगर बीएलए के अटैक्स को देखें तो वो ज्यादातर एजेंसीज और आर्मी पे अटैक करते हैं. पुलिस फोर्सेस को बहुत कम अटैक किया गया, या हो सकता है ना ही किया गया हो. लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है उसको थोड़ा सा जो है संभल के आगे बढ़ना होगा, और हर बात चाइना की मानने की जरूरत नहीं है अब, लेकिन फिर भी मजबूरी है, क्योंकि चाइना के बगैर भी पाकिस्तान का गुजारा नहीं है. लेकिन इसी में आपने एक बड़ी बात की कि चाइना की हर बात मानना जरूरी नहीं है. सुशांत सरीन, इज दैट द मैसेज दैट पाकिस्तान through these attacks is trying to give China, or send that message across to China, that Pakistan may be a Chinese vassal state, but there is a limit to which it can be treated as a vassal state? And what does this attack mean for the CPEC and the BRI? Gaurav, I am very clear that the Pakistani military establishment is a total lackey of the Chinese. They will jump when the Chinese ask them to jump. They'll sit down when the Chinese ask them to sit down. I don't think they're going to play these kind of games with the Chinese. And maybe at the margins, yes, to extract some more money out of the Chinese. But otherwise, I don't think they're going to tell the Chinese that, look, you know, don't push us beyond a point. I think
What Arzu is alluding to is part of the policy of the current military establishment led by Asim Munir. The man, he's always gung-ho, and he's the kind of a guy who thinks that even, if you want to hammer a nail, then you have to bring a bulldozer rather than a small hammer. So his approach is to double down on the past follies of the Pakistan army, which is why, for example, you see that in the recently concluded elections, if at all they can be called elections, they rigged it so badly in Balochistan that the natural representatives of the Baloch people were simply kept out of those elections. The people who were made to win, including the current chief minister of Balochistan, is a man who is a mass murderer, who has been involved with death squads, who was also the interior minister of Pakistan recently as a caretaker minister. Now, he is a man with a very dubious reputation, a man whose hands are bloodied in Balochistan, a man who's a complete lackey of the Pakistan army. Now, this is basically waving a red rag at the Baloch people and saying that we will keep bludgeoning you until you give up. And the Baloch are not saying that we are going to ready to give up. So clearly this fight is not ending. In fact, if you look at the intensity of the fight, it's only increasing. And ultimately, it is going to start affecting the Chinese. Like I said earlier, the CPEC is dead. It's not an economically viable project. Even the projects that the Chinese had already set up, they are making massive losses. The Pakistan can't afford to pay for them. Ultimately, I think the Chinese eye is on the strategic prize of Gwadar as a port in which the Chinese Navy gets some kind of basic rights. And if that is the objective, then I think these kind of attacks are going to serve as a good reminder to the Chinese that you cannot be surrounded with a completely hostile population and still hope to survive. And I think if these attacks start mounting up even more, then perhaps the Chinese will have to give up that dream. Unless, of course, they are willing to bring in a lot of their army and, completely cordon themselves off. But that will be another story altogether. Okay. बहुत बलोच जो खबर हमें मिल रही है, जो चीफ मिनिस्टर है बलूचिस्तान सूबे के प्रांत के, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है अब से थोड़ी देर पहले, वो पाकिस्तानी मीडिया में है कि जो 8 अटैकर्स थे मजीद ब्रिगेड के, वो 8 मर चुके हैं इस ऑपरेशन में, और शायद 4 पाकिस्तान आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी मारे जा चुके हैं और कई घायल हैं। लेकिन आप लोग का या जो बलोच लिबरेशन आर्मी थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, और क्या अपने मिशन में उन्हें कामयाबी मिली? आपको क्या खबर मिल रही है? बलोच गुज़िश्ता 20 सालों से आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ नौयत के अमले, पाकिस्तानी आर्मी या कि CPEC या दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे हमले होते रहे हैं। बलोच फ्रीडम सीकर्स जो कि मुख्तलिफ हलकों में हैं, सियासी हवाले से भी है, मुसल्लह हवाले से भी है, उनका यही कहना है कि हम आज़ाद बलूचिस्तान की बहाली तक अपनी जंग जारी रखेंगे। जबकि इस तहरीक में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। आज जो हमला हुआ है ग्वादर में, एक शदीद नौयत का हमला था। इससे कबल 2 महीने कबल ही BLA मजीद ब्रिगेड और उसके जो दीगर अरकान हैं उन्होंने बोलांग के इलाके मच शहर को अपने कंट्रोल में 2 दिनों तक लिया था। इस साल ये दूसरी नौयत का हमला है कि आज BLA मजीद ब्रिगेड के अरकान ने तकरीबन 3 घंटों तक एक हमला जारी रखा, जिसमें पाकिस्तानी फोर्सेस को और ख़ासकर उसके जो खुफिया अदारे हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, ISI है, उनको जानी नुकसान उठाने पड़े हैं। Arzu, any word officially on the fatalities and the casualties in this operation? What more do we know, and does this kind of show the incompetence of the Pakistani forces? They've got 2 division strengths to protect China's Belt and Road Initiative, and while Sushant Sarin believes that CPC is dead, is that the appreciation even in Pakistan? नो आई डोंट थिंक यहाँ पे लोग ये सोच रहे हैं कि CPC इज डेड बिकॉज अभी कुछ दिन पहले ही ईरानियन एम्बेसडर ने भी स्टेटमेंट दिया है एंड ही सेड कि यू वांट टू वर्क बोथ इन चाबहार पोर्ट एंड CPEC।
उसके बाद यहाँ पे ये जरूर है कि जो नई गवर्नमेंट आती है वो अपने हिसाब से चलने लगती है। इमरान खान आते हैं वो बंद कर देते हैं, शहबाज शरीफ आते हैं वो फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सीपैक को तो ये इशू जरूर यहाँ पर रहा है। मगर फिर मैं वही कहूंगी कि जिस तरह से अटैक हुआ है अभी इस वक्त गवादर में, उसको लेकर यकीनन जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर बात वही आ जाती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे हैं कि ये सब कुछ उस वक्त ही क्यों होता है जब आईएमएफ का लोन आने वाला होता है या मिलने वाला होता है इनको, तभी इस किस्म की सारी अटैक्स क्यों होती हैं। और इसके ऊपर क्योंकि आपको याद होगा 9 मई से बाहर नहीं आ पा रहे ये लोग। 9 मई को जो कुछ हुआ था उसमें से बाहर आने को इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी और एजेंसी तैयार नहीं है। हर एक को यही कहा जाता है कि जी आप उसके ऊपर बात करें और कहें कि बड़ा गलत हुआ है, और अगर आपने कोई बात की तो आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा। तो पाकिस्तान में इस वक्त अजीब टेंशन का माहौल है और बहुत ज्यादा जर्नलिस्ट वगैरह को भी जो है सोशल मीडिया भी नहीं चलाने दिया जा रहा और बार बार अरेस्ट भी किया जा रहा है। ये चीजें लेकर भी पाकिस्तान में यकीनन लोग परेशान है, मगर लोग बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। लोग बात कर रहे हैं, और लोग क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो किस तरह की बातें हो रही हैं सीपेक को लेकर और पाकिस्तान आर्मी के रवैये को लेकर? गौरव, यहाँ पे ये बात हो रही है कि हर चीज का रिस्पॉन्सिबल जो भी पाकिस्तान में हुआ है उसको लोग आर्मी और एजेंसीज को ही ठहरा रहे हैं, पॉलिटिशियंस को कम कह रहे हैं। सी पैक के लिए ये कहा जा रहा है कि जी 10 साल हो गए, 10 साल का इन्होंने केक भी काट लिया है, मगर ये कुछ बता नहीं रहे कि जो पैसा चाइना क्लेम कर रहा है कि जो पैसा लगाया है चाइना ने वो कहाँ लगा है, कौन सी रोड बना दी, कौन सी बिल्डिंग बना दी, क्या कर दिया, इसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है, ना इंटरनेट पे मौजूद है और ना ही किसी को पता है, ना ही मीडिया में बात की जाती है। और साथ साथ मैं ये भी कहती चलूं कि चाहे बलूचिस्तान हो या केपीके हो, अगर यहाँ किसी किस्म की कोई बात होती है, कोई अटैक होता है, कोई ब्लास्ट होता है, कुछ हो जाता है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उसको सबसे आखिर में दिखाता है। लेकिन अगर यही चीज पंजाब या सिंध में हो जाए, 1 मिनट से भी कम टाइम में जो है वो न्यूज ब्रेक कर दी जाती है। लेकिन इन दोनों हमारे प्रोविंसेस को बहुत ही ज्यादा निगलेक्ट किया जाता है और इसीलिए शायद ये हाल है। लेकिन हम इंडिया फर्स्ट में सब जरूर दिखाते हैं ताकि आईना दिख सके पाकिस्तान को भी और पूरी दुनिया को भी। बट सुशांत सरीन, हाउ इज चाइना एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड टू दिस पर्टिकुलर अटैक? Chinese interest repeatedly under attack in Pakistan. Dasu Dam project, China was very angry. That Confucius Center attack, China read out the riot act to Pakistan. What next? I think, Gaurav, at one level, the Chinese are going to keep increasing the pressure on the Pakistanis to allow Chinese military or security presence to guard their facilities. Now, that has been a bit of a tussle. The Pakistanis have been resisting it to some extent and saying that they will ensure security of the Chinese, which is why, you know, those two divisions which you mentioned, although those two divisions are right from up north to down south, so they're pretty, stretched out. But nevertheless, the Pakistanis have promised the Chinese that they will ensure the security of the Chinese personnel. But the Chinese have also been insisting that they want to bring in their own security forces. Now, I think that pressure is likely to increase on the Pakistanis, and we'll have to see how much the Pakistanis will be able to resist, considering that, their army chief, who's also the beggar-in-chief, has been going around with a begging ball all over the place. And in fact, the Chinese are also likely to be approached to put in some more money, in the begging bowl. So the Chinese will have a lot of leverage to try and push that agenda through. Secondly, I think the Chinese would be aware that, if they are going to be very thinly stretched out, which means that if all those projects which were originally on the drawing board were to come up, then ensuring their protection would be a very tall order, even for the Pakistanis, even if the Pakistanis were to devote more resources. And given the inefficiencies of the Pakistani security system, I don't think any security is going to be fail-safe. So that's going to make the Chinese even more reluctant to put in any more money, which in any case, I don't think they were interested in doing. Okay. Thirdly, all this talk about CPEC and the Iranian ambassador has said something. You know how long back this whole nonsense goes of Chabar and Gwadar being sister ports and stuff like that. All of this is a topi that everybody puts on the Pakistani head, and the Pakistanis start jumping up with joy the moment somebody mentions CPEC, as though that's a panacea for all their problems. But not a dime has been put in, or not a single finger has been moved by any other country
to become quote unquote part of CPEC. Oh, so I don't know absolutely. what the Pakistanis are getting so excited about. In fact, like I Arzu said, Kazmi and it's a friends in dead- Pakistan, they would well remember a corps commander in Pakistan, a man in uniform, had actually said, since nobody in Pakistan knows the nuts and bolts of the Belt and Road Initiative, the only thing that Pakistan will gain from CPEC, वो पंक्चर लगाएंगे और चाय बेचेंगे. That is all that the Pakistanis will do at CPEC. वो पंचर लगाएंगे हाईवे पर all the way from Gwadar. If at all that road ever comes up or the CPEC ever comes up to Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. But to all my guests, many thanks for joining me. We'll be tracking that story very, very closely. Pakistan is battling a fire virtually on every front, especially around Afghanistan, Iran, and now, of course, within in Gwadar. Perhaps the line of control is the only peaceful border. That's the border or the LC with India. A quick break. Election Unlocked with Rajdeep Sardesai. On the other side of a quick break, stay with us. Elections, the heartbeat of the world's largest democracy, covered by the political journalist with nearly 4 decades of experience. The man who understands the pulse of the nation. Join India's ultimate newsman. I will decode the complex political chess game that's at the heart of Indian democracy. Elections Unlocked with Rajdeep Sardesai. Maximum analysis on the Maximum channel.